morning. Today we are going to start with thirst and pressure. एवर कभी कभी आपने देखा होगा कि एक आर्मी टैंक weighing more than 1,000 tons rest upon a continuous chain. एक कैमल बहुत आराम से डेजर्ट यानी मरुभूमि के ऊपर चलता है आराम से. वही ट्रक और ए मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर. ट्रक और मोटर बस का टायर जो है ज़्यादा चौड़ी होती है. वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस. जब भी कोई भी काटने वाली चीज़ होती है उसकी जो किनारा होता है वो बहुत शार्प होता है. In order to address this question, that of the net force in a particular direction is thrust. So you can underline that what is thrust, that net force in a particular direction is thrust, and the force per unit area is pressure acting on the object concerned. Now let us try to understand the meaning of thrust and pressure by considering the following situation. The first situation, you wish to fix a poster on a bulletin board. एक बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आप एक पोस्टर डालना चाहते हो. पोस्टर जैसे ही फिक्स करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको पिन लगाना पड़ेगा. सो फॉर दिस यू आर प्रेसिंग द ड्राइंग पिन्स ऑन विथ योर थंब. You apply a force on the surface area of the head of the pin only. This force is directed perpendicular to the surface area of the board. This force acts on a smaller area at the tip of the pin. और ये force कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द पिन में अप्लाई हो रहा है, जैसे कि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो. पूरा फोर्स आपके हाथ का कहाँ पे हो रहा है? टिप ऑफ द पिन में अप्लाई हो रहा है. And in the next situation you stand on loose sand. आप नरम से सैंड के ऊपर खड़े हो तो आपका पाँव धीरे धीरे अंदर धंसता जा रहा है. Your feet go deep into the sand. Now you lie down on the sand. अब आप लेट जाते हो सैंड के ऊपर. You will find that your body will not go that deep in the sand. आपको ये दिख जाएगा कि आपका बॉडी सैंड के अंदर उतना डीप नहीं जाएगा. इन बोथ द केसेस द फोर्स एक्सर्टेड है आपकी बॉडी के वेट है. You have learned that weight is the force acting vertically downwards. हमने ये पढ़ा है कि weight हमेशा डाउनवर्ड से डायरेक्टेड होता है, क्योंकि वेट क्या है? इट इज़ W इज़ इक्वल टू F इंटू जी. जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड्स होगा ही. Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. So you got the definition of thrust. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. When you stand on loose sand, the force, that is the weight of your body, is acting on an area equal to the area of your feet. जब आप खड़े रहते थे, जब आप लूज सैंड के ऊपर खड़े थे, तो आपके पूरे बॉडी वेट सिर्फ और सिर्फ 2 लेग के सरफेस एरिया में अप्लाई हो रहा था, जिसकी वजह से आपका लेग अंदर की ओर धंसे जा रहा था. लेकिन जब आप ले डाउन हो गए, जब आप ज़मीन के ऊपर लेट गए, तो सेम फोर्स, आपके बॉडी का वेट तो सेम ही है, तो सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कंटैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी. आपके पूरे बॉडी के कंटैक्ट एरिया के बराबर एरिया में द फोर्स इज़ गोइंग टू बी गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. सो विच इज़ लार्जर एरिया? The 2 legs surface or your whole body surface? Obviously your whole body surface is having the greater surface area. जिसका surface area ज़्यादा,
उसमें फोर्स का इफ़ेक्ट कम होगा. So thus the effects of force on the of the same magnitude on different areas. तो फोर्स तो वही है, आपके बॉडी का वेट ही यहाँ पे फोर्स है, फोर्स वही है, लेकिन सरफेस एरिया चेंज हो रहा है. पहले आपके दोनों लेग के सरफेस एरिया थे, बाद में पूरे बॉडी का सरफेस एरिया आ गया. तो इन द अबव केसेस थ्रस्ट इज़ द सेम. दोनों केसेस में thrust is the same but effects are different. Therefore the effect of thrust depends on the, therefore you can say that the effect of the thrust depends on the area on which it acts. The effect of thrust on sand is larger while the standing than while laying. जब thrust जब आप खड़े थे तो thrust ज़्यादा था, जब आप लेट गए तो thrust कम हो गया. So the thrust on unit area is called the pressure. Now getting the definition of pressure, the thrust in unit area is called the pressure. So pressure is equal to thrust upon area. Substituting the SI unit of thrust and area, the equation becomes, we get the SI unit of pressure as Newton per meter square. And in honor of scientist Blaise Pascal, the SI unit of pressure is called the Pascal. SI unit of pressure is called the Pascal, denoted by capital P and small a. Let us consider some of the numerical example to understand the effects of thrust acting on different areas. We will discuss about the numerical